हो ओवर टाइम जाएंगे। ना वही सोच रहा हूँ कि अनसेड रूल्स ना लूपहोल है। सिंपल बात ये है, ये बकवास है। इशू आस्क मी। When the world decides to be on the edge, we say not. Hello, welcome back, guys. It's nice to be back. It's nice to be back after a freaking hiatus that we took, which wasn't needed, in all honesty. But क्या करें, कभी कभार अच्छे चीज़ों पे वापस आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है. बट वेलकम बैक चौधरी, वेलकम बैक रोहन. वी गॉट चौधरी जॉइनिंग इन फ्रॉम लंदन, जहाँ पे अब रोशनी 6:30 बजे ख़त्म हो जाती है. वी गॉट रोहन जॉइनिंग इन फ्रॉम दुबई, जहाँ सारी रोशनी कुएं से ही निकल के आती है. But welcome, guys. Interesting podcast that we have for the audience today. Something that we have been planning to do or wanting to do for a very long time, but we wanted कि थोड़ा confidence तो आ जाए कि we are able to beautifully handle this topic. We might still end up shitting all over the place, but this is what it is. We'll run by it. I'll start the podcast by spelling out the definition of sport according to Cambridge Dictionary. It says a game, a competition, or any activity needing physical effort and skill that is played or done according to rules for enjoyment and or as a job. You Which can. brings I me to the question, is chess a sport? I'm worried. I don't know. bro, that I don't know. By this definition, I don't think I've ever played a sport. But yeah, You have the enjoyment part, we have done it, no? हाँ, but फिजिकल एक्टिविटी ब्रो हमने टेनिस भी ऐसे ही खेला है, ब्रो बस खड़े चेस खड़े इज अ दस बार में स्पोर्ट, उसमें भी ऐसे उंगली यहाँ से यहाँ उंगली जाती उठती है. है. इट इज या यू हैव डन स्पोर्ट्स. Physical activity, mental activity. Easy. Uh, but for today's episode, the keyword being rule, uh, rules specifically. And in general, there are two sets of rules that exist. One set of rules are the rules in the rule book to sort of protect the competitiveness of any sport. The other set of rules are those rules which are not written in any rule book, but it is expected to be followed to protect the spirit of the game. If I break down this statement, हर शब्द का अलग अलग पॉडकास्ट बन सकता है. Spirit का, what do you sort of define a game? Are you, why are you forced to sort of follow that? All of those conversation can become a separate podcast. But ब्रो स्पिरिट मत बोल रहे, नवरात्र चल रहे हैं पढ़ेंगे. oh, very, very, very important. Very like interestingly, I was part of a team gathering last night, um, and then I understood why do they call ki a team gathering is needed to increase the team spirit. Like yeah, when the That team needs a consumes separate spirit episode. together, it leads to increase in team spirit. It was that. But before we get into the seriousness and the tough looks and the मेरा मुद्दा ही सही है conversations, let's talk about the rules that defined our बचपन. While we were enjoying our बचपन का प्यार, it might have been a cricket, a football, a basketball, whatever it would have been. हम लोगों को बचपन के सारे गेम ना कुछ रूल्स के साथ ही बनते थे. क्रिकेट में होता था, फुटबॉल में होता है, बास्केटबॉल में होता था. लेट्स पिक अप दोज इंटरेस्टिंग, क्वर्की, वियर्ड, फनी, हैप्पी rules of your neighborhood sports that were part of our evening thing, unlike hookahs and coffees of these youth of today. Yes, I'm looking at you, but that's how it is. Chaudhary, I'll start with you. Tell me, I know you're very excited about this part. यार क्रिकेट ही खेला है मतलब मोस्टली बचपन में, तो चार पांच चीजें थी. आई गो विद वन, देन आई लेट रोहन गो, देन यू गो, देन आई कम बैक विद अ फ्यू मोर, राइट? बट व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे मैं बोलूं जैसे बहुत प्रोफेशनल खेला जाता है, बट जब भी गली में खेलना स्टार्ट किया तो आई वाज द यंगेस्ट, राइट? और 90s इंडिया में, और आई थिंक अभी के इंडिया में भी थोड़ा बहुत है, बट तब तब का रेड टेपिज्म वाज आल्सो इन क्रिकेट.
इन गली क्रिकेट कि मतलब अगर आप सबसे छोटे हो तो आपको सबसे एंड में बैटिंग मिलेगी। शायद खाली अगर फील्डिंग ही मिले। शायद खाली फील्डिंग मिले। और इसी चीज़ को इतना वैल्यू मिलता है आज के दिन में, जब प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जब एक अंडर 15 क्रिकेटर जब अंडर 21 की टीम के साथ खेलता है, तो खेल रहा ही इज अराइव्ड, ही इज वेरी गुड। हमने बचपन से वही किया है यार, ऐसे है क्या। एग्जैक्टली। और बड़े भैया खेल रहे हैं, अगर आप वो 8वीं क्लास में हैं तो या 10वीं क्लास में हैं, तो आप उनकी सुनो, बिकॉज वो तो काउंटी खेल के आ रहे हैं। आप तो गली में खेलते हो बस, तो आपको पता ही नहीं है। तो हाँ, आई थिंक वो इंटायर ब्यूरोक्रेसी अराउंड कि इट वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज मैन, कि मतलब जो सबसे बड़ा है वो बैटिंग कर लेगा पहले। द ओनली गाय हु यूज्ड टू ट्रम्प इट वाज जिसका बैट बॉल है, मतलब अगर वो भी अगर आपसे छोटा है तो यू कैन सॉर्ट ऑफ विगल अराउंड एंड हायर से कि भाई प्रायोरिटी। हाँ बस। अगर छोटे बच्चे का बैट है तो उसको थोड़ा हल्का सा लेवरेज मिल जाएगा कि हाँ इसका बैट बॉल है, इसको नंबर 3 पे भेज दो, नंबर 4 पे भेज दो। वरना बड़े भैया यूज्ड टू रूल द रोस्ट। मेरे साथ तो वही था काफी सी। रोहन, अपने देश में बैट कहाँ बनता है? जलंधर, मेरठ। मैं वो इस एक रूल के वजह से जलंधर मेरठ में जो एक्स्ट्रा बैट की मैन्युफैक्चरिंग हुई है ना, कि भाई मैं यंगस्टर हूं, तो ओनली थिंग दैट्स गोना सेव माय एस एंड सॉर्ट ऑफ गेट मी 3 balls टू प्ले विल बी अ न्यू बैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैन। यार एक मतलब इट वाज मच लेटर कि हम सब जगह रन्स मार पाते थे, बट आई थिंक मोर इंटरेस्टिंग वाज कहाँ के रन होते थे। आई थिंक क्रिकेट में पीछे तो एनीवेज वाजंट पार्ट ऑफ द फील्ड एनीवेज, बट इस जनरली इट वाज वी ओनली लेग साइड। पीछे के नहीं है, खाली ऑफ साइड के। अगर तुम थोड़े से प्रो हो गए हो तो, या थोड़े से बड़े हो गए हो, तो ऐसे होता था हम ऑफ साइड के रन रखेंगे। रेगुलर जनता लेग साइड की रन रखती थी। एंड देन देवर हम जैसे घर के पीछे खेलते थे या गली में खेलते थे, तो स्ट्रेट वाज द ओनली थिंग अवेलेबल जहाँ पे जगह होती थी। साइड पे विंडोज हैं तो वहाँ वैसे ही डायरेक्ट वॉल पे, विंडो पे आउट होता था, बाहर गई आउट होता था, शीशा तोड़ दिया आउट होता था। साइड के घर में मारा तो बॉल खुद लेके आनी है। सो ओवरऑल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्लेस वर determinant of what rules were made. देखो तुम यार लोग का दो तो तीन पता नहीं, चीजें। सॉरी। तुम लोग का पता नहीं, बट मेरे ज़िंदगी में लेग साइड और ऑफ साइड का कॉन्सेप्ट ना लिंकिन पार्क के एंट्री के साथ ही हुआ था, जो 11वीं 12वीं कक्षा में हुआ था। उससे पहले तो लेग साइड ऑफ साइड का तो आइडिया नहीं था। आई थिंक उससे पहले ये ज़रूर जान लिया था जब रूल होता था कैरम बोर्ड में, कि भाई लाइन जो होती है ना कैरम जहाँ से मारते हैं स्ट्राइकर, उसके पीछे वाले को मारना है कि नहीं मारना है वो बता दो पहले गोटी या को। ऐसे नहीं करना होता था। तो वो इंटरेस्ट तो ऐसे नहीं करना होता था ना, तो फिर हम लोग ने ऐसे भी करना शुरू कर दिया था कि भाई ये वाला तो हाँ, टैक्टिक चल सकता है वाला। हमने तो वो उसूली लाइन के पीछे वाले नहीं हिट कर हाँ, सकते। हिट ही नहीं कर सकते, मतलब अलग। और हाँ, शीशा टूटने वाली बात हमारे यहाँ भी यार वो था, जो शीशा तोड़ेगा वो बॉल शायद लेके आएगा, सबके सब ऐसे भाग जाएंगे, पर या अगर उसकी और मन है तो नई बॉल ले बॉल जाएगा। लाएगा, और नई बॉल लेके आनी है कल। हमारे यहाँ तो यार एक हमने बीच में ट्राई भी किया था कि पार्क छोटा सा था सोसाइटी में, वी ट्राइड कि जो बाहर मारेगा वो आउट होगा, और वो चल नहीं पाया बहुत देर। और एक और था कि हाँ मतलब यही सब था। यार उसका ना हम लोग ने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ था कि यार अगर मतलब 4 बजे खेलना है, ठीक है, 4 बजे वाले टाइमिंग के हिसाब से अगर समझ लो जो भी लास्ट आ रहा है ना खेलने के लिए, उसका काम ही डर्टी जॉब वाला था। ग्राउंड के बाहर बॉल जा रही है तुम लेके आओगे, नाली में बॉल जा रही है तुम लेके जाओगे, और डरावने अंकल के घर पे चली गई है तो तुम लेके आओगे। यही नहीं, अगर समझ लो रोड पे खेल रहे हो और पीछे से गाड़ी आ रही है तो ईंट हटाने का काम भी भाई का था। वो वही करता था। तो मतलब आना है तो टाइम पे आओ, वरना मत ही आओ भाई, उस दिन बेटर है। भाई तुम्हारे अ, वहाँ वो था क्या मैच अबैंडन का रूल, कि मैच कब कब अबैंडन होगा? हमारे यहाँ बहुत क्लियर रूल था, जिसकी बैट बॉल है अगर उसकी मम्मी गुस्से में है और उन्होंने चिल्ला दिया तो उसी समय मैच अबैंडन है, मतलब नो क्वेश्चन आस्क्ड, खत्म। वो भागा, सब भागे और खत्म। I think जनरल one रूल्स of बनते थे when सबके। once we grew and sort of started playing with people of the same age, one concept that became very clear was कि जिसकी पहले बैटिंग आती थी वो बॉलिंग लास्ट करेगा।
अगर किसी ने बॉलिंग पहले करना है तो बैटिंग लास्ट करेगा। यार वो अभी तक चल रहा है, पता है? वो अभी तक दसम सिंह वो आजकल जो मतलब रोहन और हमारा जो बालकनी वाला क्रिकेट भी होता है उसमें भी यही चलता है कि भाई मैं बैटिंग पहले नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बॉलिंग बॉलिंग करूंगा पहले। ये देखो, हम थोड़ा लिबरलाइजेशन के जस्ट बाद के बच्चे हैं ना, तो अभी भी हम सोशलिस्टिक है थोड़े। अभी आजकल के बच्चे थोड़े कैपिटलिस्टिक हो गए होंगे, बट हम तो वी आर लाइक इक्वली बांट लो भाई आपस जीतना में। है तो बता दो। हाँ। यार एक बहुत बड़ा भयंकर गोल्डन रूल था जो उम्र के साथ सीखा, जब भावनाओं के बारे में जानना ज्यादा सीखा, कि अगर किसी लड़की पे क्रश है तो उसका जो भाई है उसको अपने टीम में रखो, क्योंकि भाई गलती से वो दूसरे टीम में चला गया तो ना उसके बॉलिंग को मार सकते हो, ना उसे आउट कर सकते हो, उसके उसको साथ में लेकर उसमें सेफेस्ट ऑप्शन होता था कि भाई उसको सिंगल लेने दे, स्ट्राइक से हट जाएगा, अगले दूसरा जो है वो संभाल लेगा, मैं तो नहीं संभाल रहा। क्योंकि अगर उसको आउट किया या उसके बॉल को छक्का मारा तो मतलब वो जो ख्याली पुलाव जो पकड़ा था उस मोहतरमा के प्रति ना वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो वो रूल मतलब बहुत आवश्यक रूल था उस समय के लिए। इस बट इस रूल का पता आपकी अभी की मुहतरमा को है कि नहीं है? वाकिफ है, वाकिफ है हम। वाकिफ है। हाँ, हाँ, नहीं तो दो तीन दिन में हो जाएंगी। नहीं तो आप पर अभी बहुत सारे रूल लगने वाले हैं। हाँ, तो या गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड डेज दैट genuinely made us love बिल्कुल। each and every ओल्ड कल मेरे sports. को कौन कल मुझे कॉन्सर्ट पे एक 23 साल के बच्चे ने अंकल बोला है यार, तो ओल्ड तो मत ही बोलो 23 साल के? वो इतना तो मेरे साथ भी भाई। नहीं हुआ ब्रो, मैं 16-17 तक गया हूँ। Now on a bit of a serious part, I think the unsaid rule in general has been a conversation that does not have an end point, a conversation that has been happening across ages, uh, a conversation between different age groups, because and the so-called lovers of the game might have a different perspective. The so-called new generation who have grown up in the T20 spectrum and everything have a different point of view on it. But unsaid rule in general has always been a topic of conversation, and I don't see it ever ending. I think it's a conversation that's gonna uh, go down till the end of time conversation. Something specific that we want to quickly jump upon is cricket, uh, because of being called a gentleman's game, getting overburdened under its own weight, because I don't think the unsaid rule is more spoken about in any sports as compared to cricket. And I'm coming from a point of being a person who follows multiple spaces of multiple sports also, uh, specifically talking about the favorite unsaid rule of getting a batsman out by this so-called uh, rule of Mankad. Wanted to understand honestly what your point of view is. What's your thought? Like, where do you stand when it comes to these unsaid rules? Overall, before I get to bunketing, I think cricket, maybe because it's a English sport, and how English were generally थैंक on थैंक यू how फॉर सेइंग वर हियर। या how English were generally about I won't say about being good, but about their rules, or about things they believed at that point of time, which they implemented on different things they got into. बट उस वजह से आई थिंक काफी अनसेड रूल्स हैं क्रिकेट में, इट बीइंग अ जेंटलमैन स्पोर्ट। वो इतने देर से चल रहा है कि यार एक तरीके से खेलना चाहिए स्पोर्ट। देर इज रिस्पेक्ट एट द एंड ऑफ द डे, देर इज जो था, हम सब भी उसी
एरा को क्रॉस टी करके बड़े शर्ट हुए, एंड आई टी शर्ट थिंक बाहर मत निकालो। हाँ, टी शर्ट बाहर मत निकालो। गावस्कर हैड अ ह्यूज थिंग अक्रॉस 90s 2000s ऑफ प्लेयर्स एंड फास्ट बॉलर्स कैसे निकाल सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, बट थिंग्स हैव चेंज्ड आई थिंक। I But wouldn't be wrong, but I'd say मेरा point of view on munkading or dismissing a player before the ball is bowled is might have also changed. I think I might have had a different point of view or might not have had a point of view 10-12 years back. But अब मेरे को यार काफी clearly लगता है कि यार आउट है, तो आउट देना चाहिए. It is something which is written in the law. There is nothing to be टू शाय अवे फ्रॉम. अगर आउट है, तुम नहीं निकल सकते तो नहीं निकल सकते यार उससे. ऑब्वियसली देयर आर व्यूज के बॉल ही नहीं बोल हुई है, बट यू आर, एंड you've seen how runouts are here, and runouts क्या, everything now after being tracked, everything is about millimeters and half a millimeter, and half of the seam of the ball is inside or outside or will hit the stump or not. So this, whatever said and done, will give you an advantage when you're at the other end or run out ka chance hai. So which should not be given in any ways what is becoming a batsman friendly game. talking about cricket being a gentleman's game, across time there has been an evolution on what a gentleman is also. uh, Exactly, the good the point. definition of Gillette. gentleman has actually gone from Gillette, like, to sort of being more rugged. That's how it has happened. Maybe and when both are gentlemen in their own special manner. Gentlemen, the brutest of a man that you see on the road can be the best gentleman that might be existing in this world. So the definition of gentleman in general, a gentleman is can be a person who can sort of take a brutal but honest decisions in their life. A gentleman doesn't necessarily need to be always polite and and low on their tone and all of those conversation. But आई जेन्युइनली बिलीव क्रिकेट अपने ही वेट के अंदर ना दबता जा रहा है. मतलब अनफॉर्चुनेटली चीज़ वो है. मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू था जिसमें, मतलब, चौधरी, इफ यू कैन जस्ट लेट मी नो योर थॉट आल्सो ऑन दैट. एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स ना, आई बिलीव देयर सर्टेन थिंग्स इन क्रिकेट which is not reversible, which cannot be sort of compensated by doing something else. What I'm trying to say, अगर एक बंदा आउट हो गया है और उसने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लिया है, तो there's no rule under cricket where that person can come back. Very clear about that. Similarly, but in other sports like a football, uh, if because of some ungentlemanly thing or something that the team is not aligned with, they end up scoring a goal. There have been incidents in football where the coach and the team have sort of jointly decided कि भाई जिसके अगेंस्ट गोल किया है उसको गोल कर लेने दो ताकि बराबर हो जाए. So in some way that action has been reversed. I don't. Do you think cricket also struggles from those things कि यार कुछ चीजें रिवर्स नहीं कर सकते हो? यार नहीं, वो देखो, चॉइस हमेशा होती है, और ये माही भाई को इस पर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला यार आईसीसी से. सो इफ यू रिमेम्बर, उस पे बहुत बवाल हुआ था बैक देन व्हेन इयन बेल वाज रन आउट, राइट? Yeah. प्रवीण कुमार डिड इट. आई रिमेम्बर, एंड वन ऑफ माय And Ian ऑल Bell टाइम, was out of the field. he was उसको out तो of the field. It हाँ, was lunch or tea at that point of लंच time. उस टी के बाद दोबारा बुलाया था. There were Yeah. altercations which happened inside the dressing room. I don't know, spirit था, pressure था, क्या था, whatever. Mahi bhai said, look, come back. Praveen Kumar would not have agreed, I'm sure. But Mahi bhai said, come back, right? And in the past as well, मेरे को याद है 90s में Cronier did this a couple of times, man. मतलब Ganguly was run out once, player obstruction के चक्कर में. He was walking out. He called him back. Now Sachin एक बार run out होने वाला था. He stopped during a controversial 99 match fixing series, right? Yeah. He stopped the player from throwing. One of my favorite cricketers. But हाँ यार, irreversible का नहीं है. I think it's yeah, I just think, coming back to your point of gentleman ना, मेरे को लगता है कि cricket
in 70s 80s even there may have been a sport of leisure is become extremely competitive now with with at least with franchise cricket यार पॉइंटर्स तुम्हें करोड़ों मिल रहे हैं तो फ्रेंचाइज ऑन रिजल्ट्स तुम जेंटलमैन बन जाओ या रिजल्ट दे दो राइट सिंपल बात ये है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यार पीपल वांट टू विन ना मतलब all these young boys who are coming to and who are choosing to play the sport they want to do really well at the sport man वो There's वहाँ more यहाँ on पे the टाइम पास line. करने नहीं आए तो वो वहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया यार एंड इट्स ओनली फेयर राइट कि दे गो टू द एक्सटेंट possible to win now as I'm saying it I'm just reflecting why did I not like the 90s Aussie team so much when I'm advocating this right now but that's a topic for some other day right on marketing or on any other rule specifically यार point is कि मतलब द ट्रूथ सच्चाई के लिए तुम नजरियों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना आई मीन अगर पॉइंट है कि किसी ने मंकट किया आउट आउट दिया आउट कर दिया तो उस चक्कर में अगर वो मेरे साथ होगा फ्रॉम अ स्पिरिट ऑफ द गेम पर्सपेक्टिव मैं बोलूंगा हाँ यार ये तो गलत हुआ है और दूसरा बोलेगा मैंने सही किया पॉइंट इज देयर इज अ रूल रिटन डाउन इन द बुक्स एंड यू हैव टू फॉलो दैट रूल मैन सिंपल बात है आई रिमेम्बर एंड आई जस्ट टेक मे बी वन मोर मिनट राइट जब ये झूलन गोस्वामी का लास्ट ओडीआई था एट लॉर्ड्स आई वाज देयर टू वॉच इट राइट Deepti Sharma ran out Charlie team. Hmm. And the moment she ran her out, I ran out of the stadium because I said, ये तो कुछ थोड़ा गलत हो गया है अभी आसपास के जो हमारे मित्र लोग हैं मेरे को गाली देंगे whatever it was. In hindsight, it was right, man. Nothing was wrong. Harsha Bhogle said, I want to see a day when somebody does not run somebody out with uh, by when somebody's out of the crease by a margin, by a slightest of margins, वापस आ जाओ. and वापस आ जाता है वो हम और ऑलमोस्ट उसके पहुंच बाद चुके थे. और वर्ल्ड कप वो जीत जाते हैं उस चक्कर में मतलब अगर आपने लीड लिया है हेड स्टार्ट लिया हुआ है आपने 2 इंच का हेड स्टार्ट लिया है 2 रन चाहिए फाइनल बॉल पे आप 2 रन भागते हो बिल्कुल 2 इंच से अंदर घुसते हो क्या आप सही हो आप गलत हो यू रॉन्ग सो मतलब पॉइंट होल पॉइंट बीइंग अ रूल इज अ रूल फॉलो इट यार एंड जब लिखा गया तो लिखा गया थोड़ा सा ना क्रिकेट में बहुत चीजें ओपन है. इट इज नॉट थोड़ी बट वो समहाउ दे आर ट्राइंग टू क्लोज आउट थिंग्स बट काफी देर से a lot of things are open. अब अंपायर डिसीजंस विद डीआरएस थोड़े से क्लोज आउट हो रहे हैं ऑन डिसीजन बिकॉज पहले किसी ने नहीं दिया एलबीडब्ल्यू नहीं दिया आउट रिप्ले भी एक दो के बाद नहीं दिखाते थे कि यार कितना No, अंपायर्स I वो कर don't. गए. On that point, umpire's call, I don't agree with that crap at नहीं all बट आई because नहीं नहीं माय पॉइंट इज लार्जर कि बहुत सारी चीजें अभी भी हैं ऑन विच आर ओपन. अब बॉल कब चेंज करनी है क्रिकेट में इट इज ओपन. हम्म. तुम्हें बॉल वो एक रिंग है उसमें से पास कर सकते हो बट इट इज ओके. अगर बॉल ग्राउंड के बाहर चले जाती है एक अंपायर डिसाइड करता है कौन सी बॉल किस कंडीशन में ले रहे हो. तुम फुटबॉल यार में उसका 20 ना 20 30 बार बॉल चेंज होती है बट द बॉल इज उसमें भी अंपायर स्टेट डिसाइड स्टेट करता है ब्रो. बहुत बार यार प्लेयर नहीं नहीं प्लेयर बट बोलता है स्टेट कि नहीं फुटबॉल नहीं में दैट थोड़ा इज हवा फाइन बट कम है. हाँ. स्टेट ऑफ द गेम नहीं चेंज होती बट इसमें बॉल की बिकॉज द बॉल हैज अ वेरी बाउंसेस. इंटीग्रल. तो अब यार बट रोहन फंडामेंटली तो मतलब जस्ट सॉरी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ प्रॉब्लम उसमें मेरा एक प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट है क्रिकेट थोड़ा डिफरेंट स्पोर्ट इसलिए भी है बिकॉज उसमें वेरिएबिलिटी हायर है राइट नहीं पिचेस बट डिफरेंट है वेरिएबिलिटी हम कम कर रहे हैं. हम डिसीजन मेकिंग में कम कर रहे हैं. हमने यार बट पिच ओडीआई में कंडीशनों बोल में दिया आप ओडीआई में बोल दिया 2 नई बॉल लेके आओ तो हमने वेरिएबिलिटी और कम कर दी. बट यार अब इफ यू प्लेइंग अ मैच एट कोटला वर्सेस एमसीजी वो वेरिएबिलिटी तब भी रहेगी ब्रो थोड़ी हाँ बहुत वही मैं कह पॉइंट रहा वो हूँ. है ना तो क्रिकेट बहुत यूनिक स्पोर्ट है. सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी. मैं तो काउंटर व्यू दे रहा हूँ ऑन Mankad might be another thing, but having an umpire, for example, you could replace an umpire, but उसकी importance है of people awaiting a decision, LBW होगा नहीं होगा, उस 4:30 बजे प्ले बंद करना है कि नहीं वो एक लाइट मीटर देते हैं बट इतना डिपेंडेंट होता है ऑन व्हाट द अंपायर्स फील के बॉल दिख रही है कि नहीं अभी स्पिन डालनी है पेस डालनी है. देयर इज सो मच वेरिएबिलिटी इन क्रिकेट ओवरऑल एज अ स्पोर्ट कि वो थोड़ी सी डिफरेंटली बनी हुई है यार स्पोर्ट. एंड इट्स हाउ somebody I was reading it somewhere that it is one of the very few sports where the ball or whichever object you're playing with actually touches the playing surface on a जैसे बेसबॉल में फुटबॉल में इसमें
बैडमिंटन में नहीं करती. सो वेरिएबिलिटी ऑन द सरफेस रिड्यूसेस एंड हाँ, ईच सरफेस इज वेरी एग्जैक्टली. डिफरेंट. ईच पिच इज डिफरेंट. हर कंट्री का सॉइल डिफरेंट है. देर इज डिपेंडेंसी ऑन पीपल स्पिनिंग और स्विंगिंग इट वन वे और दी other which changes. I'm sure you can say फुटबॉल में भी ठंडी कंडीशंस में अलग स्विंग होती होगी बॉल और whatever, बट इसमें काफी चीजें मतलब एज आई सेड चीजें कम हो रही हैं, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ओपन एंड वेरिएबल टू कंडीशंस एंड टू पीपल मैनेजिंग द गेम. चौधरी चौधरी, चौधरी इज लुकिंग यार मैं काफी देर से यार वेट ना, कर रहा मैं है कुछ ओवर बोलने के टाइम लिए. ना वही सोच रहा हूँ कि अनसेड रूल्स ना लूपहोल है. सिंपल बात ये है, ये बकवास है. यू आस्क मी. क्योंकि यार पॉइंट ये है एंड दिस कि इज वेयर वी एंड ये आवर अनसेड पॉडकास्ट गाइस, थैंक यू सो मच. अनसेड रूल्स यार, वी कैन ऑल बी सेइंग कि हाँ हम जेंटलमैन है, ये है वो है. जब स्टेक्स बढ़ते हैं ना, इंसान जानवर बन जाता है भाई. सिंपल बात है, सबको जीतना होता Very valid. What is spirit of the game? है. हाँ, spirit of the game is go out, compete, win the match, and come Win the back, match. right? That is the That's all spirit. you want to do. Whatever sport it is, right? Correct. Don't kick somebody, don't hurt somebody. Obviously, don't be Play, disrespectful, don't be racist, don't be all of those things. Huh. yeah, right. But if you edge the ball, the umpire has not picked it. Will you walk? You won't walk, right? If it's a World Cup final, will you walk? You won't walk. Simple. So all this rule unsaid, one said, ye wo. I think these are good things. I यार think आई the थिंक only मेरे को. unsaid rule should be. हाँ सॉरी बोलना. बोल. मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अनसेट रूल ये होना चाहिए भाई, इंसान टाइप रहो थोड़ा बस. जूता वूता मत मारो, बाकी सब ठीक है, चलता है. डोंट बी शाकिब. Exact, don't be Shakib. Bro, Don't be Shakib, don't be we will Asif, go in a don't be wrong Shoaib. direction. Like we can't mention Bangladesh cricket team during this podcast. It's a separate subsection sub episode that needs to be happening. ब्रो बट मेरे को. I will start losing my shit. I'm telling you, because that team needs to go back to school to understand what and why a sports is played. यार बट क्रिकेट ना काफ़ी मेरे को लगता है हमारे व्यूज़ बहुत जैसे इंडिया और हम लोग सोशली डेवलप हुए हैं ना, तो हमारे व्यूज़ भी चेंज हो गए हैं. हम लोग जब 80s 90s में थोड़े से एज अ सोसाइटी सबमिसिव थे, तो हमें मंकड़ वंकड़ और जेंटलमैन अच्छा लगता था तो तब. हम हारते कितना थे, और हम जीतते ही हाँ कहाँ थे वही यार तो. तब. तब नहीं तब नहीं, एक इट्स ढंग से नॉट हारते अबाउट थे. हारना, इट्स अबाउट हाउ वी वर. अब हम बेचारे ऑस्ट्रेलिया. थे तब यार. ऑस्ट्रेलिया तब फाइट मारती थी क्योंकि उनका कल्चर वहां पहुंच चुका था, जहां अब हमारा कल्चर पहुंच रहा है कि फाइट मारो, जीतो, जीतना जरूरी है लाइफ में. तो थोड़ा सा आई थिंक इट इज एक्सेप्टेंस, मतलब वो थी. बिकॉज इंग्लिश वर मे बी दैट वे टू स्टार्ट वेर यू सेड इट वाज अ लेजर स्पोर्ट एंड नॉट अ competitive sport, बट ऑस्ट्रेलियंस आए और आए, उन्होंने competitive बनाया. वेस्ट इंडीज ने 70s में बोला कि भाई हमें दिए, हम भी बाउंसर देंगे. तो भाई बेन स्टोक्स वर्ल्ड कप जीत गया अनसेट रूल पे, पता नहीं क्या चौका मार के. ये 2 इंच वाले हर्षा भोगला के उस पे धोनी वुड हैव सर्वाइव्ड द रन आउट. हाँ एग्जैक्टली. बट उसका भी शायद Yeah. होता है ना कुछ मैच का, बट या. Quickly moving on, Chaudhary, if there are certain rules of these unsaid rules that you feel should be established as an official rule, uh, which one would that be? इस्टेब्लिश की हटाना है, कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी that establishment can be कि it's wrong. Yeah, cricket actually, we removed this rule a couple of years back when you weren't allowed to fake field or implement runouts, fake fielding. So basically, a lot of keepers used to act as if the ball's coming to the stump, but the ball wasn't coming to the stump, और दूसरे end पे run out हो जाता था. So something like that, but वो हटा दिया था. But I don't think that should be removed. I think that is a rule that can be revoked. वो throws बिना बॉल के थ्रो करते थे वो सब. I think इतना तो प्लेयर्स देख सकते हैं, बॉल का इतना गेम मतलब इवॉल्व हो इतना चुकी है presence of तो. mind तो बनता है. हाँ इतना होना चाहिए यार. I think that is one rule that should come back. यार ये कीपर वाला वैलिड है क्या? कि आई थिंक कीपर वाला स्टिल वैलिड है. आई नहीं थिंक नहीं, इट वाज कीपर अबाउट फेक नहीं कर फेक सकता. थ्रोइंग. कीपर अब फेक नहीं नहीं कर कर सकता. क्या सकता, बात कर ऐसे रहा नहीं है? कर सकता. हाँ कीपर कांट फेक, वो रन आउट नहीं बट ऐसे मानेगा वो. पॉइंट अभी आई थिंक रिसेंटली क्विंटन डिकॉक ने फकर जमान को रन आउट किया था ब्रो, ऐसी आई थिंक. नहीं अलाउड. वो वो पाकिस्तान के उसने. अगेंस्ट सब कुछ अलाउड हो जाता है, bro.
Bro, one rule I think we should be revoked is कि यार Rizwan को हम उसने पता है क्या किया था? हाँ क्विंटन डिकॉक खड़ा रहा था. ही एक्टेड, मतलब इन अ वे था, बट ही हाँ एक्टेड एज इफ मेरे पास बॉल नहीं आ रही, एंड एंड में ही टुक द बॉल एंड उसने आउट कर दिया था. तो वो ऐसे रादर ऐसे रादर देन कि लेजरली बॉल घूम, पहले आ हाँ, गया टाइप. उस वो लेजरली घूम रहा था कि बॉल नहीं आ रहा, बॉल नहीं आ रहा, फिर आया थ्रो, उसने आउट कर दिया. हाँ ओके गॉट इट आई जस्ट थिंक अभी ये यूएस ओपन में लास्ट ईयर ट्राई हुआ है ऑन कोचेस ट्राइंग टू कोच प्लेयर्स व्हाइल प्लेइंग हम्म. आई जस्ट थिंक होना चाहिए आई होना थिंक चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक होना चाहिए अल्टीमेटली देख गेम पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इट विल मेक इट स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग इफ यू आस्क That will also मी reduce the number of susu break the players will take. एग्जैक्टली सुसु ब्रेक फालतू की इंजरी ब्रेक ये वो इंजरी ब्रेक तो नहीं रुकेगा वो होना चाहिए दूसरा आई डोंट नो मैन यार ये बट उससे एक ये सॉरी उस पे इम्पैक्ट नहीं होएगा ऑन जो Flow of the एक्चुअली वो game. बाकी स्पोर्ट्स में भी होता है, वेर नहीं, अगर कोई बाहर एनालिसिस कर रहा है कि यार उसका बैकहैंड नहीं चल रहा है, तो कोई बता देगा कि इट्स बैकहैंड पे फाइन डालना आई चाहिए, विच इज थिंक ओके. ठीक व्हिच है. इज ओके यार आई वो तो थिंक यार बाकी स्पोर्ट्स में भी हो ही रहा है, यार मेरे को फुटबॉल लगता है में, एनालिसिस क्रिकेट में. जस्ट अ टूल मेरे को लगता है कि दो बंदे अगर खेल रहे हैं ढंग से तो अपने आप संभाल लेंगे मतलब यार थोड़ा आईपीएल ऐसा में नहीं मसाला है बट आईपीएल के मसाला ऐड डगआउट करो में प्लेयर बाद में दिखता है, लैपटॉप पहले दिखता है. तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट. End of the day, if a coach is able to sort of help the player on field, I don't think that should be an issue. I एंड had two दूसरा मेरे points. को आई थिंक माय सॉरी माय अदर पॉइंट इज आई जस्ट थिंक यार अगेन इट्स नॉट अबाउट अनसेड रूल्स और व्हाटएवर आई जस्ट थिंक फ्रॉम अ डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ना given umpires intervention has become so high in sports now कि यार वो थोड़ा ना rivalries और बातें खत्म होनी स्टार्ट हो गई हैं कैरेक्टर थोड़ा खत्म हो रहा है आई जस्ट जैसे थिंक कि थोड़ा बहुत जैसे यार स्लेजिंग ऑलमोस्ट आई डोंट इट्स ओवर नाउ ब्रो इन स्पोर्ट्स 90s क्रिकेट वर्सेस क्रिकेट राइट नाउ इट्स टोटली ओवर तो थोड़ी आई नो बच्चे सुन रहे हैं पर बच्चे वैसे भी सुन लेंगे बाहर से वो फर्क नहीं पड़ता यार उनको सब सब बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में आजकल तो फर्क नहीं पड़ता आई थिंक sledging just made the sport a lot more interesting bro if you ask me the character is the same sort thing, of slightly deader we're reducing the humanness of sports. yeah यार exactly बट है ही है स्लेजिंग तो. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया जाके, इंग्लैंड जाके सब किया है ब्रो. यार ऑस्ट्रेलिया बहुत शरीफ हो गई है विराट बट को वो बस मिस कर रहा है अब कि हमें नहीं सुना रहे लोग ज्यादा. हाँ एग्जैक्टली विराट आईपीएल विराट को आईपीएल की कॉन्ट्रैक्ट सस्ते करो यार या विराट को स्पोर्ट्स नहीं बदल पाया, विराट को उसके बच्चे ने बदल दिया. या Two points, one tangible and one very philosophical in my head because I've been thinking about it for a very long time. The first one is more of a revokeness. I'm going by the trend. Yeah, sports is about emotion. Sports is about celebration. I think the rule on in football, and I would honestly want to read more about it because I can't pinpoint where this rule sort of got established. But the rule of player getting yellow carded because they ended up removing their jersey टी for a goal शर्ट्स. celebration is foolish. I don't understand why it is such an important thing that needs to be followed. Uh, Again, don't cross your line, don't be like Martinez, sort of Emi Martinez, the Argentinian goalkeeper right now, got fined and everything for doing some ashleel harkat with the trophy on the field. All of those things make sense, don't do it. But removing of jerseys for the sake of celebration and going all Saurav Ganguly on the field and getting yellow carded after that is dumb. Is dumb. In all honesty, स्पेशली that's अगर a rule. बॉडी भी बनाई है. सीरियसली एग्जैक्टली मतलब जिम मतलब जा रहे हो मतलब जाओ वो 3.5% बॉडी फैट के साथ जीने वाली जो जनता है. हाँ, दिखा लो. But that was one. The second thing, there is an unsaid rule across sports which is not being followed, is what I feel, that we need to protect the players who are playing. We need to be more careful about how they are handled. We need to be more careful that their body doesn't reach a point where they end up breaking like a piece of twig. uh, and that's more both mentally and physically. uh, the kind of mental trauma we fans throw across these athletes and players, uh,
every time they have had a bad day needs to be controlled in a better manner, and the influx of social media in general has become batshit crazy. There's a Tottenham Spurs player. I think if I'm not wrong, he's a 21-year-old Welsh international called Brennan Johnson. He ended up deleting his social media because he couldn't take the pressure that was coming on social media. I, he's an absolute king legend on what he has done after that. He has become the first player since Harry Kane to score six consecutive goals in six consecutive games. But that phase where which led to him deleting his social media was an absolute unfair thing for us to give. The second thing, physically, I think sports has become overburdened with its schedule, man. Look, there's too much of everything happening. Uh, we enjoy sports because of these players. We enjoy the craziness because of these players. I don't think we are protecting them enough, just for the sake of commercialization and putting a mask of. Uh, we are helping the sports reach various corners of the world. We are screwing up their life. द अमाउंट ऑफ फुटबॉल इंजरी, मतलब यार, जब मैंने फुटबॉल देखनी शुरू की थी ना, एसीएल इंजरी ना बहुत कम सुनने को मिलता था। अब सीजन शुरू हुए हुए अगस्त से कितना टाइम है, 2 महीने हुए हैं। दे हैव बीन मल्टीपल एसीएल इंजरीज अक्रॉस फुटबॉल, मैन। We won't be having these players. They literally will be robots who will be playing on rather than players playing. If this is how the schedule is going to look like, Club World Cup, FIFA World Cup, इंटरनेशनल ब्रेक, अपने क्लब के लिए खेलो। क्लब का अगर इंटरनेशनल स्पॉन्सर है तो उसके इंटरनेशनल कंट्री में जाके खेलो। मतलब मार दिए हैं हमने। So I genuinely believe the unsaid rule of protecting these athletes should be the genuine focus for the authorities, for the respective authorities. वरना कुछ enjoy करने के लिए बचेगा ही नहीं। I would like to establish an unsaid rule for us, that we should be consistent on our recording for the next episode that we're gonna come out with. Yeah. On that note, over and out, guys.